After teaching hundreds of students, I've realized there's one thing that separates the A star students from all the other grades, okay? And that one thing I'm going to be explaining it in the next 3 minutes. मैं timer लगाऊंगा just so I do not ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए. All the star students guys out there, there's one thing very common in them, and that is discipline. Discipline beats motivation every time. Okay, again, this is kind of a motivational video. अगर आप लोगों को लगे, discipline will always beat motivation. And the students that are not disciplined, remember, they always suffer from anxiety. उनको anxiety होती है. Now what is anxiety? Anxiety is when you know कि you have to do something and you're not doing it. It's basically when you do not have the courage. अब ये एग्जांपल हमेशा मैं थोड़ा सा एक फ्लेक्स के साथ आप लोगों को समझाता हूँ. तो थिंक ऑफ दिस एज अ क्यूब. दिस क्यूब इज यू. ओके, अब हम इसको क्यूब को जरा साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? नाउ व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस क्यूब इन अ क्लास. देखें, एट दिस पॉइंट दिस क्यूब बेसिकली लुक्स लाइक इसमें तो यार सारा का सारा खराब हुआ है, ठीक है? इसमें आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, बट ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई टेक, इट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू अ परफेक्ट एंड. ओके, it brings me closer to a perfect end. And this is what you all need. You all need to start working. Once you get into the flow, once you get into the motion, जब आपका motion establish होता है, तो होता क्या है? Slowly and steadily you get into a flow state. Once you get into the flow state, what happens? This happens. Very smoothly and very simply आप लोग, you reach a point कि जिस point पे आप एक परफेक्ट स्टेट पे पहुंच जाते हैं. एंड दिस इज द ए स्टार. नाउ दिस इज जस्ट मी फ्लेक्सिंग सॉल्विंग अ रूबिक्स क्यूब टू बी ऑनेस्ट, बट अदर देन दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सी. देखिए, स्टार्ट में था, इट टुक मी सो मेनी स्टेप्स. एंड गोल सबका सेम होता है. द इशू इज दिस, आप लोग ये पहला स्टेप नहीं लेते. ये इसको ए स्टार में पहुंचने के लिए नॉट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. बट इफ यू नॉट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, कैसे होगा? एंड दैट इज व्हाट कॉजेज एंग्जाइटी, दैट इज व्हाट कॉजेज प्रेशर. एंड रिमेंबर गाइस, समथिंग व्हिच इज इन मोशन always stays in motion. न्यूटन का लॉ है, थोड़ी फिजिक्स इस पर अप्लाई करें. अ थिंग दैट हैज मोमेंटम, उसका मोमेंटम में जब वो होती है, व्हेन इट हैज मोशन, इट गोज एंड गोज एंड गोज ऑन एंड इट हेल्प्स यू. आप लोग क्या करते हैं? यू गाइस ब्रेक दिस मोशन. आप लोग एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे नहीं. That is where discipline versus motivation comes. You have to be disciplined. Study 5 hours every day. Studying 5 hours every day is better than studying 12 hours one day and then not studying for the next 2 days. So you have to make sure that guys you go for discipline. हर दिन करें. Do something very small but do it. And guys, ये जो anxiety है, I got so many messages today. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, I only have 30 seconds left. मैं अब आपको messages अगर I'm gonna try मैं इधर लगा दूं of students saying कि हमें एंजाइटी होती है, हमें टेंशन हो रही है. अगेन पैनिक अटैक्स एक्स वाई जी. आई गॉट अ कॉल अ फ्यू डेज अगो, अ किड वाज क्राइंग एज वेल कि मुझे पैनिक अटैक कर रहा है ना. आई आस्क्ड उसने क्या किया? नहीं सर, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ. दैट इज वेयर दिस एंजाइटी कम्स फ्रॉम. सो यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप ले एंड मेक श्योर दैट यू स्टिक टू इट. Discipline will always beat motivation. Remember, every student that aced their examination was a disciplined student. मोटिवेशन वालों ने भी शायद किया हो, बट हर स्टूडेंट जिसने किया है उसमें डिसिप्लिन जरूर था. एंड विद दैट, आई होप दिस रियली हेल्प्स एंड दैट फिनिशेस आवर 3 minutes.